Hello, I'm Sneha Koshi. Prime Minister Narendra Modi has accepted on Twitter an invite by the US Speaker Kevin McCarthy, an invitation to address the US Congress during his state visit to the United States on June 22nd. This is going to be the second address by Prime Minister Modi, a joint meeting of the US Congress, the first being in 2016. I'm being joined by my colleague Maha Siddiqui right now. Maha, quite an important moment this would be. Yes, and especially because this is the second time that Prime Minister Modi will be addressing a joint session of the U.S. Congress. The invitation came on the first from the House Speaker Kevin McCarthy, and in that letter he had mentioned that they would like to hear, that is the congressmen would like to hear and the congresswomen would like to hear about the future of India-US ties, how this friendship should be taken forward, how this partnership should be taken forward, and the vision that India has for this relationship going ahead. This relationship assumes greater significance in the current times, Sneha, because of the common threat from China. While China is at the loggerheads with America over many issues, including trade, in the Indo-Pacific, the growing aggression of China has not just been a cause of concern for the countries, for countries like the smaller countries in the Indo-Pacific, but even neighbors like India as well as the U.S. There is a need for free, open navigation and in the Indo-Pacific, and this is something that has been stressed upon by all the countries in the Indo-Pacific region, largely the major players in the Indo-Pacific, especially the Quad nations like India, US, Japan and Australia. In that context, the US Congress would like to hear what the vision of India is for this relationship, and in that context, this invitation has been extended, which has now been accepted by Prime Minister Modi. Right. Thank you, Maha Siddiqui, for all of those details. And now the latest on the human tragedy in the Odisha train disaster. The number of dead in the train tragedy is now at 288. 83 bodies still remain unidentified, even as the Odisha government undertakes massive task of identifying each and every dead body and handing over the bodies to the families who've lost their loved ones. It's a massive struggle and a weight for many. Saurabh Gupta reports. In the unfortunate Balasore-Coromandel train accident, we request everyone to kindly spread the word and help in the identification process. A long wait for Gorachand Banerjee to collect his son Subhashish's body from the morgue at this Bhubaneswar hospital. Mr. Banerjee's son was one of the 288 victims of the Balasore train accident. The West Bengal resident has been waiting since yesterday to claim the body, but authorities say it will be handed over only after the results of a DNA test are out. जब बॉडी टोटल आइडेंटिफाई हो गया, मामा ने आइडेंटिफाई कर दिया. जब आइडेंटिफाई किया है, टोटल पेपर्स रेडी हो गया, बट फिर क्या हुआ पता नहीं चला. उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट होगा. डीएनए टेस्ट करने के बाद बॉडी छोड़ेंगे. We are getting here some relatives who are not in blood relations also. So that's why some identification is not happening properly. So that's why yesterday Dr. AIMS has taken decision. We have taken decision कि we'll collect blood samples for DNA testing. 4 days after the tragedy, there appears to be big confusion over the identification and handing over of the remaining bodies. At the All India Institute of Medical Sciences in Bhubaneswar, NDTV met at least 3 families who alleged the bodies of their relatives had already been claimed. Bengal resident Zakaria Laskar says his uncle Abu Bakr Laskar's body has been claimed by someone else. वो बोल रहा है ये मालदा में एक महिला लेके चला गया, तो महिला का नाम तो मेरे को पता नहीं है, वो यही से बोल रहा है कि महिला लेके चला गया है. 30-year-old Meera Devi has the same complaint. Her son was 16 years old. सर तो डॉक्टर तो कहा बॉडी दूसरा के दे दी.
दूसरे को दे दिया। Odisha's chief secretary told NDTV over 80 bodies have still not been identified, and preserving them for too long is a big challenge. अस्पताल का लिस्ट, मॉर्चुअरी का लिस्ट, टेम्पोररी फास्ट पॉइंट कलेक्शन, इंक्वेस्ट पॉइंट का लिस्ट, ये सब को रिकन्सिलेशन करने के बाद और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से रिपोर्ट लेने के बाद आज कलेक्टर बालेश्वर finally has confirmed the final figure of death to be 288. Identification of bodies and handing them over to the right families is critical after an accident like this, where several bodies have already decomposed and identification becomes difficult, which is why now, after some instances of confusion, authorities are insisting on DNA tests. While that is a legal requirement, the point is that adds to the trauma of families who've lost their loved ones. With camera person Pavan Kumar and Aniruddha Tripathi in Bhubaneswar, Saurabh Gupta, NDTV. And in an exclusive interview to NDTV, Saurabh Shukla, Bajrang Punia, who along with Sakshi Malik and Vinesh Fogart has been leading the protests against Wrestling Federation Chief and BJP MP Brij Bhushan, has denied any setting with the Home Minister after their meeting with him and said the protest movement hasn't died down. They are strategizing on how to take it forward. He also denied reports that the minor girl had taken back her charges against Brij Bhushan. गृह मंत्री से क्या बात हुई, अगर आप बताना चाहें थोड़ा बहुत? ये वो एक साइड तो हमारे को बोला गया कि भाई इस मीटिंग पे कहीं पे भी कोई कुछ नहीं बोलना है, जो सरकार के लोगों द्वारा, और उसके बाद पीछे से वो चीजें निकल के आ रही हैं। सरकार के लोगों ने बताया कि आपकी मीटिंग हुई है, मैं तो बता रहा हूँ आपको। वही बोल रहा हूँ ना, तो और आपने तो बताया नहीं हमें, देखे वही लोग पीछे से बता रहे कि भाई खिलाड़ी मिले हैं और ये बात हुई है। तो हमने यही कि भाई हम गृह मंत्री जी से मिले हैं, हमने यही बात रखी कि भाई उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक, उनका बचाव हो रहा है अभी तक, ऐसे केस हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। तो हमने तमाम चीज़ें बताई उनको, तो बोले कि हम बात कर रहे हैं और इस पर ज़रूर एक्शन होगा। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई बातचीत से, अगर हम बातचीत किसी भी आदमी से नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से नहीं करेंगे, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? गृह मंत्री के अंडर दिल्ली पुलिस से आप मिले, सही किया आपने, तो वो चीज़ें अलग हैं और प्रोटेस्ट अलग है। बजरंग, एक खबर अब ये भी आ रही है सामने कि जो नाबालिग लड़की जिसने यौन उत्पीड़न की कंप्लेंट दी थी, उसने अपने बयान बदले हैं जाके कोर्ट में। पहले 164 में उनके मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए, फिर उन्होंने अपने बयान बदल दिए हैं, या एक तरीके से कह लीजिए जो उनके आरोप है उनसे वो पीछे हट गई हैं। इस पर क्या आपकी बात हो गई उनके परिवार से, या आप लोगों के साथ में ही? जाहिर सी बात है कि सब आप लोग साथ में हैं और वो भी एक महिला खिलाड़ी है, पहलवान है, उस पर क्या कहना है? उस पर क्या आपके पास कोई जानकारी है कि वो वाकई पीछे हटी है नाबालिग महिला पहलवान? देखिए, सोर्सेज ही चल रहे हैं, सूत्र, हाँ सोर्सेज ही चल रहे, सूत्र ही चल रहे हैं। अब ये बताइए कि देश उन सूत्रों पे भरोसा करे या उनके फादर के जो बयान आए हैं उन पे भरोसा करे? उनके फादर से आपसे भी बात हुई होगी जी, तो बोल रहे कि हमने कोई भी कंप्लेंट वापस नहीं ली है, नहीं हमने कोई बयान चेंज किए हैं। तो हमारी भी बात हुई है, तो हमें भी वो यही बोल रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा ये सूत्र आते कहाँ से हैं और ये खबर चलती कहाँ से है। पूरा देश ये सोचना चाहिए कि भाई उसके फादर पे हमें भरोसा करना चाहिए या सूत्रों पे हमें भरोसा करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि उनके फादर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सारे, जो ये बात आ रही है कि उन्होंने बयान बदले नाबालिग लड़की ने, वो गलत है? ये तो न्यूज़पेपर में भी आई है और हमारी बात हुई, उन्होंने मना किया है। उन्होंने मना किया बिल्कुल, कि भाई जैसे हम लड़ाई में शुरुआत में थे ऐसे ही अब खड़े हैं। And sources have told NDTV that Delhi police has interrogated the Wrestling Federation chief Brij Bhushan a couple of times. He's also the BJP MP. Akhilesh has more on this. Mr. Brij Bhushan Sharan Singh was questioned twice by the Delhi police and he was questioned in detail, and the questioning lasted for 6 hours each time. And based on that questions and his answers, you know, a special team was sent to Gonda because one of the women wrestler had alleged that
he actually tried to sexually assault her on 16th and 17th of October in 2017. But Mr. Brij Bhushan Sharan Singh has told the Delhi police that that period of time he was in Lucknow on the 16th attending a camp for the junior wrestlers, and on the 17th he was in Gonda, which is his parliamentary constituency. So to verify those claims by Brij Bhushan Sharan Singh, a team had gone to Gonda, which has questioned the people around Mr. Brij Bhushan Sharan Singh, and also to try to verify his claims that whether he was actually there or not. And similarly, the Delhi police has conducted a very thorough and detailed investigation into all the allegations. We have been told by the sources that more than 200 officials, women wrestlers and coaches, they all have been questioned, because in each allegation the Delhi police has tried to go deep inside the allegations, because suppose somebody was present at that time the allegation was made, so Delhi police has tried to contact them and try to verify those claims. So that's why it is taking time, but we have been told by the sources that very shortly a status report will be submitted to the court, and in that status report Delhi police will clarify what is the basis and what is the investigation has reached so far. And the bodies of 2 children have been found in a wooden box in a house in Delhi's Jogabai Extension area. In the preliminary investigation, it seems that both the brothers and sisters went inside the box while playing, and then the box got closed so that they could not get out, and both the children died of suffocation. Mukesh has more on this. देखिए, बिल्कुल अभी तक की जांच से ऐसा लगता है कि दोनों बच्चे लकड़ी के बॉक्स में खेलने के लिए गए थे, और फिर अचानक से ये बॉक्स का जो ढक्कन है वो बंद हो गया, जिससे बच्चे बाहर नहीं निकल पाए और दोनों बच्चों की उस बॉक्स के अंदर ही दम घुटने से मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने दोनों बच्चों के जो शव हैं वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। पोस्टमार्टम के बाद जो है डेथ का जो असली रीजन है वो साफ हो पाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस को आज शाम को ये जानकारी मिली कि जोगाबाई एक्सटेंशन में एक मकान के अंदर एक बॉक्स में बच्चों के शव पड़े हुए हैं। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि 2 बच्चों के शव एक लकड़ी के पुराने बॉक्स के अंदर हैं। जांच में ये बात सामने आई कि एक बच्चा 8 साल का है, जबकि दूसरी उसकी बहन जो है वो 6 साल की थी। जब दिल्ली पुलिस ने बच्चों के पिता बलबीर से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो इसी मकान में और गोदाम में चौकीदार हैं। आज दोपहर करीब 3:30 बजे बच्चों ने उनके साथ खाना खाया, और खाना खाने के बाद बच्चे खेलने लगे और फिर अचानक से बच्चे गायब हो गए। तो घर में काफी तलाशने के बाद जो बलबीर हैं उनको बच्चों के शव लकड़ी के बॉक्स के अंदर मिले, जिसके बाद पुलिस पहुंची। तो पुलिस के मुताबिक अभी शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि दम घुटने से बच्चों की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो डेथ का असली रीजन है वो साफ हो पाएगा। लेकिन बेहद ही दर्दनाक हादसा, एक बक्से के अंदर 2 बच्चे खेलने के लिए गए और दोनों की दम घुटने से मौत हो गई। Extremely tragic incident. And now moving on, an Air India flight headed to San Francisco from New Delhi was diverted to Russia after it developed an engine glitch. The plane landed safely in Magadan, according to Air India officials. Now, the Air India flight AI-173 operating from Delhi to San Francisco developed a technical issue with one of its engines. The flight with 216 passengers and 16 crew members were diverted and landed safely at Magadan Airport in Russia, according to airline spokesperson, and have also said that there's going to be an alternate flight arranged by the Air India for passengers to proceed to San Francisco. And the credit sites analyst said that Adani's debt metrics is improved. Adani Enterprises, Adani Power and Adani Ports have moderate leverage. Leverage still high at the Adani Energy, Adani Green Energy and the Adani Transmission. Credit sites called Adani Group deeply over-leveraged a year ago. Despite improving debt metrics, risk remains, is what the analyst said, wary of lingering corporate governance headwinds, some execution risks to external fundraising plans, and debt refinancing risks for select upcoming debt maturities has also been stated. For now, time for a short break.
Welcome back. And a probe has been initiated at multiple levels in Bhind, Madhya Pradesh, following revelation about alleged misuse of the central government's CoWIN portal, meant for COVID-19 vaccination registration, to issue fake COVID vaccination certificates to various beneficiaries. This health sub-center in Madhya Pradesh, Bhind district, is shut for the last few months as per locals, but government records claim it carried out 30 COVID vaccinations on one single day in May. The irregularity, part of an alleged fake vaccination racket in the district. मेरठ के रहने वाले हैं। अच्छा मैडम, कहाँ आप भिंड में रहती हैं? कहाँ रहती हैं आप? गोरखपुर में। ये हम तो जयस में हैं, काम कर रहे हैं। जयस में? जी। नहीं, मतलब कौन से राज्य में रहते हैं आप? मध्य प्रदेश के हैं? नहीं, ये अमेठी जिला में सर। NDTV contacted 6 to 7 persons on this vaccination list. All of them said they are not from MP. A probe has revealed fake vaccination sessions were created at the health sub-center and fake certificates generated too. ये टेक्निकल उसका पोर्टल का जो इशू है और उस पोर्टल में किसने क्या किया, कैसे किया, ये जांच का विषय है। और इसके लिए जो भोपाल का जो IT का जो टीम है, जो विभाग को भी मेल और दूरभाष से भी अवगत कराया है। उनका टीम भी इसको जांच कर रहे हैं और पुलिस भी उसको प्रिलिमिनरी जांच में लिया जाकर उसमें जांच कर रही है। Government sources say an organized racket may be involved in issuing fake vaccination certificates, particularly to those flying outside the country, by allegedly misusing the vaccination portal. In Bhopal, with camera person Rizwan Khan and Dilip Anurag Dwari for NDTV.